बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस ऑनलाइन लेक्चर में आज हम तो फर्स्ट टॉपिक है जो कि इससे पहले मैंने क्लास में किया हुआ है, लेकिन उसको जस्ट रिवाइज करवाऊंगा मैं, ताकि फिर फर्दर हम नेक्स्ट टॉपिक भी कर सकें क्योंकि ये उससे लिंक है। इट इज़ अबाउट द क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस मटेरियल। नाउ द टेक्निकली जो क्रिस्टलाइन मटेरियल्स होते हैं, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हैं, दे हैव द वेल अरेंज लार्ज और स्मॉल क्रिस्टल्स पे होता है, लेकिन उनमें अरेंजमेंट जो है वो क्वाइट डिस्टिंक्ट होती है। और एक क्रिस्टल इज एन ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पार्टिकल्स इटसेल्फ। क्रिस्टल क्या होता है कि एटम्स और मालिक्यूल या आइंस का एक एग्रीगेट्स होता है, लेकिन उसमें उनकी तरतीब जो है वो एक सीक्वेंस फॉलो होती है। So crystalline solid has a long range order, which means that there is a consistent pattern of particle arrangement that repeat itself on a regular basis across the entire crystals. So the examples of typical crystalline solids are sodium chloride and quartz. जैसे यहाँ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, तो इसमें ये एक रिपीटेशन है, एक हेक्सागोन बन रहा है, तो एक ख़ास सीक्वेंस में ये हेक्सागोन, इसके बाद पूरा ये हेक्सागोन बना रहा है, और फिर दूसरा हेक्सागोन, फिर तीसरा हेक्सागोन, इस तरीके से ये जॉइन हुए हुए हैं। बट इन मॉर्फिस में जो है कि ऑलरेडी ये अगर देखा जाए तो ये आपके पास हमारे पास एक टेट्रागोन बन रहा है, लेकिन ये जो है ये टेट्रागोन नहीं है, एक डिफरेंट ज्योमेट्री बन रही है। तो इस तरीके से इसकी जो अरेंजमेंट है वो एट रैंडम होती है। सो क्रिस्टलाइन जो मटेरियल्स हैं या सॉलिड्स हैं, दे हैव वेरी डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज़। उनमें से एक ही है कि सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बिगिन टू मेल्ट at स्पेसिफिक टेम्परेचर, जो उनका एक आइडेंटिफिकेशन का तरीक़ेकार होता है, जो क्राइटेरिया है बेसिकली। द शेप्स एज आर वेल डिफाइंड एंड आल्सो पार्टिकल अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर वेल डिफाइंड। उसमें कोई जो है ना वो इरेगुलर पैटर्न नहीं होता। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव क्लीवेज प्रॉपर्टी, which means that when we cut the edge of a sharp tool with the sharp tool, they split in two pieces and nearly formed surfaces are smooth and plain. और इससे किसी भी हमें उसको एज काटें तो दो पीसेस में बन जाता है, और वो दोनों सरफेसेस जो है वो स्मूथ और प्लेन होती हैं। सो दे हैव a distinct heat of fusion as well as the other properties. Density. Crystalline solids are anisotropics. Anisotropic solids have a physical properties such as electrical resistance or refractive index that differ when measured in different direction within the same crystals. तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होती हैं, और आमतौर पर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को जो है वो ट्रू सॉलिड्स भी कहते हैं कि दे आर ट्रू सॉलिड्स, बाय अमॉर्फिस जो है फॉल्स सॉलिड्स हैं। सो टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बेसिकली जो हैं, 4 टाइप्स को हम उनको क्लासीफाई करते हैं। नंबर 1 जो है उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इन द मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। बुनियादी तौर पर इनका जो बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल है वो मॉलिक्यूल्स है, एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो है वो फर्दर इनमें डिवाइड किए जाते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, like they are made up of either atoms such as an organ or helium, or molecules formed by the non-polar bonds such as hydrogen, chlorine, iodines. तो इनके एटम्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वीक डिस्पर्शन फोर्सेस, शिलन फोर्सेस होती हैं जो इनको होल्ड करके रखती हैं। Polar molecular solids are, on the other hand, they are made from the molecules of substance like HCl, H2, SO2, and many other. The molecular solids, they are held together relatively stronger forces, intermolecular forces, जिसको हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। तो इसलिए इनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स रिलेटिवली हाई होते हैं नॉन पोलर के मुकाबले में, बट इलेक्ट्रिकली दे आर इनएक्टिव बिकॉज देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। द मॉलिक्यूल्स में जो आयंस हैं वो स्टैटिक होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, these solids have a very polar covalent bonds between hydrogen, fluorine, oxygen, nitrogen, जिसकी वजह से वो उनको होल्ड करके रखते हैं, और इसी वजह से उनके दरमियान प्रॉपर्टीज़ काफ़ी डिस्टेंट होती हैं इनकी। आयनिक सॉलिड्स नेक्स्ट आ जाता है, इसमें दैट आर द पार्टिकल दैट मेकअप ऑफ आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स आर 3 dimensional arrangement of cations and anions held together by strong electrostatic forces. So these solids are naturally very hard but brittle.
The melting points and the boiling points are also very hard because the ions cannot move freely, so they are electrical insulated in the solid state. When the ionic solid is molten or dissolved in water, the ions become free and then they can easily conduct electricity. Metallic solids next class आती है are well organized collection of positive ions that are surrounded and held together by sea of free electrons. These electrons they are mobile and are distributed evenly throughout the crystals. Each metal atoms add one or more electron to the sea of mobile electrons. So metals' high electrical and thermal conductivity is due to these free and mobile electrons. These electrons flow through the network of positive ion when the electric field is applied. Similarly, the other one is the covalent or network solids. The formation of the covalent bonds between two adjacent atoms throughout the crystal results in a wide range of non-metallic crystalline solids. और इसमें आमतौर पर हमको joint molecules भी कहते हैं. Because the covalent bonds are strong and directional in nature, atoms are held very tightly at their positions. These solids are extremely hard and brittle. Their melting point, boiling point बहुत ज़्यादा होते हैं. Electrically insulated होते हैं. Diamond और silicon carbide इसकी well examples हैं. So now the last part is amorphous. Amorphous solids जैसे कि amorphous से मुराद है no form are made up of irregularly shaped particles. Short range may exist in the arrangement of constituent particles. In such a solids, only a short distance is a regular or periodically repeating pattern is observed in such arrangement. So amorphous solids include gels, plastic, various polymer material, wax and thin films जो है वो उसकी कैटेगरी में आते हैं. So properties of amorphous solids जैसे इससे पहले हमने उसमें देखा था crystalline solids की. The solids have gradual they become soften over a temperature range and can be shaped into various shapes when heated. Amorphous solids are pseudo solids or supercooled liquids, which means they move very slowly. Or is amorphous solids have an irregular shape, indicating constant particles do not have a definite geometries. So when amorphous solids are cut with sharp acetone, irregular surfaces are formed. वहाँ regular surfaces बनती थी. Because of irregular arrangement of particles, amorphous solids do not have a fixed heat of fusion or heat of vaporization. And the last point, because of irregular arrangement of particle, amorphous solids are isotropic in nature. इनकी जो properties हैं वो सारी direction में हर एक x, y, z में तीनों में जो है direction है वो same रहती हैं. ये एक हिसाब से अच्छी बात भी है, but it depends on your application side. So this is again the comparative thing. Amorphous solid, crystalline solid, well arranged particles, constituent particle arrangement, well defined. ये इनका comparison इस टेबल में शो हुआ है, जिसको आप मैं ये PDF शेयर करूँगा तो आप इसको देख लीजिएगा. So this is all about the first lecture जो कि इस सीरीज़ का ऑनलाइन है. नेक्स्ट में हम क्रिस्टल लैटिस और इससे रिलेटेड चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे. So if you have any question, ask me in WhatsApp group and or any query. Thank you.